Navdeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. So, students of 8th class, let's start with the chapter number 10 India, Climate, Vegetations, and Wildlife. Until now, you are aware of the physical locations and political division of India based on the physical location. The climate in India varies drastically. Do you know why the climate changes? In this chapter, you will learn about the factors affecting the climate of India and different seasons that exist throughout the year. You will also learn, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद ओशन अराउंड 3 साइड्स. इसकी 3 साइड्स में इंडिया के जो है वो ओशंस है, समुंदर है. वाइल सम प्लेसेस इन इंडिया आर क्लोज टू द ओशन. कुछ एरियाज जो है वो ओशन के पास हैं और कुछ जो है वो दूर हैं. थस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेराइज सिग्निफिकेंटली. इसलिए उसका जगह जगह जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो चेंज होता है. Thus, the climate in India varies significantly, which is why you will find deserts and snowfall in the different region of the country. Let's list the different factors affecting the climate of different region in India. So first क्या है? Latitudinal extent and size. The climate depend on how close or far the region is from the equator. Equator से वो region कितना दूर है और कितना पास है, ये भी एक reason है. Latitudinally, the northern and southern halves of India lies in the temperate and torrid zone respectively. This region experiences tropical monsoon climate because Tropic of Cancer divide the country almost into half. Tropic of Cancer जो है वो धरती को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में. The tropic monsoon climate is also experienced due to the influence of the monsoon winds which affect the entire Indian subcontinent. It is also because of the impact of the peninsular shape of Indian mainland and the presence of the Himalayan range. Next आ जाता है हमारा seasons. Considering the variations in air temperature, rainfall and air current, India experience 4 seasons. India 4 experience को है वो experience करता है. कौन कौन से हैं? Summer, period of southern southwest monsoon, period of retreating monsoon and winter. The summer season. It extend from March to May. गर्मियाँ जो है मार्च से मई तक होती हैं. April is the hottest month in western and southern region in India. April month जो है वो साउथ एरिया जो इंडिया का है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी मानी जाती है. मई इज़ द हॉटेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया. और हमारे जो उत्तरी भारत है वहाँ पर मई मंथ जो है सबसे हॉटेस्ट माना जाता है. The sun crosses the equator from the beginning of March and start moving toward the Tropic of Cancer, resulting in rising the temperature. This season is more intense in North India as compared to South India. This is because South India experiences the moderating influence of seas and has a higher altitudes. The average temperature during the season is about 30 to 40 degrees. This season caused a strong low pressure cell to develop over northwest and central part of India, whereas high pressure remains over the ocean. As a result, toward the end of May, North India attract monsoon wind from the Indian Ocean. ठीक है. During summer, India experience bright and sunny sky, very low humidity, dust storm as well as local winds like Loo and Kalbasakhi. ठीक है. गर्मियों में आपने देखा है गर्म हवा जो चलती है. पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन. इट एक्सटेंड फ्रॉम जून टू सितंबर. इसका जो टाइम है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है. द ह्यूमिड मानसून एंटर वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडियन ओशंस एंड कॉजेज रेनफॉल. The southwest monsoon cause heavy rainfall. The southwest monsoon split into 2 branches. They are the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. नेक्स्ट आ जाता है हमारा विंटर सीजन. इट एक्सटेंड फ्रॉम नवंबर से फरवरी तक जो है वो सर्दियाँ रहती हैं. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ. जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है. ड्यूरिंग दिस सीजन द सन इज़ जस्ट अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. हेंस सनलाइट फॉल्स इनडायरेक्टली ऑन वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग टेम्परेचर. एडिशनली ड्यूरिंग दिस सीजन क्लाउड
and dry northern monsoon passes over different regions of India, which drastically decrease the temperature. This season is more intense in the north as compared to the south. It's because South India lies close to the equator and is more influenced by the sea. The high pressure cell develop over North India. However, the pressure in South India remain relatively low. As a result, cold and dry winds blow from the Indo-Gangetic plains toward the Bay of Bengal. नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेजिटेशंस इन इंडिया डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फिजिकल लोकेशन लीड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अलग अलग तरह के जो है जहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऑल रिफ्लेक्ट टू द climate of that area. The table describes the natural vegetation in India according to the climate is related vegetation and characteristics along the important species of tree. The following tables also provide the distributions of the respective vegetations. So I hope you understand about the chapter up to the page number 98. Thank you.